Good morning. Good morning, everyone. Happy Sunday. If I am audible, just leave a message. Good morning, everyone. Thanks for joining. Good morning. Thanks for joining. If you can hear me, please leave a message in the chat box. Hello everyone, thanks for joining. Hi Vipin, good morning. Hi Ravi, good morning. Thanks for joining. Hi Neetu, good morning. Thanks for joining. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आज वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग. टुडे वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. एंड जैसे कि आप लोग जानते हो, एज यू ऑल नो, हमारा जो ज़ीरो से पीओ सीरीज़ है विच इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम and it's a complete banking project. We are looking at a number of banking exams. We will be working on strategies. We are working on an overall view of the exam. We are discussing, we are brainstorming. So the series is on in full spirit, in full enthusiasm. So in today's episode, in today's video, we are going to look at descriptive English. Now, if you are looking forward to this video and you are waiting to enroll yourself into a very reliable and a comprehensive online course, this is the right time. Because as you all know, our ultimate BeeBanker online course is here. And this course will look at exams like IBPS PO Clerk, SBI PO Clerk, IBPS RRB PO Clerk, and ECGC PO. A new batch is starting from 16th of April. Now we have a very exciting news here. We guarantee it's going to be 100% selection in 2 years. Or full refund. And we have the confidence to give you this offer because our course comes with very comprehensively designed content matter, crisp videos, expert faculty, sample questions, previous year's question paper, mock tests, and many more. You really need to enroll yourself to get a flavor of what we have to offer. Otherwise, you get a full refund if there's no selection in 2 years. So this is the right time to get enrolled. And these are some of the features of this exciting plan that we have to offer. So we have study plan, we have daily live doubt clearing classes, we have complete preparation plan, and it is a graded preparation from basic to high level, plus performance monitoring by weekly test. And you all know performance monitoring is so important because this is going to give you the feedback that you need to assess your own preparation level. With that in mind, today we are going to talk about ECGC PO, SBI PO, and IBPS PO, but we are going to look at an overall descriptive English strategy. So we are going to start off by looking at the
question paper format. We will look at some cutoffs. उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स देख लेंगे प्रीवियस ईयर्स का, एंड देन वी विल मूव ऑन एंड टेक अ लुक एट द स्ट्रेटजीज. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. गुड मॉर्निंग. Okay, so let's first start off by looking at the exam pattern for ECGC PO. So essay writing is there, as you all know. All these descriptive exams, they usually have an essay writing. So you need to answer 1 out of 2 given options, 20 marks, and you also have Pressy writing. So again 1 out of 2 given options, 20 marks. So total time allotted would be 40 minutes for both questions together. Next, let's move on. For SBI PO 2021, and I'm just looking at the last year's paper pattern. For SBI to PO 2021, we had essay writing, letter writing. We had 2 questions, 30 marks, and you had to do this in 30 minutes. For IBPS also, the topics were different, but the area was same. We had a essay writing, we had letter writing. Okay, again 2 questions, but slight difference, 25 marks. (30 minutes). Hello everyone, good morning. Hi Venkat, good morning. Thanks for joining. अच्छा, तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये आप समझ सकते हो कि अगर हम ECGC PO ले, SBI PO ले, IBPS PO ले, तो हमें 3 एरियाज़ पे कंसंट्रेट करना है. हमें एक ऐसे पे कंसंट्रेट करनी है, हमें लेटर पे कंसंट्रेट करनी है, और हमें प्रेसी में कंसंट्रेट करनी है. तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स एरियाज़, इन तीनों कंटेंट एरियाज़ को थॉरली डिस्कस करेंगे. आप जो स्ट्रेटजी क्या होना है वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा, तो एक बार कट ऑफ देख लेते हैं. ये है हमारा ECGC PO 2021 का कट ऑफ क्या था, आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में देख सकते हो. तो यहाँ है, हाँ रवि हम बताएंगे क्या क्या टॉपिक आता है. ये तो हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हम जो डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक्स आते हैं ये कौन सी एरिया से आते हैं, विच एरियाज डू यू नीड टू फोकस ऑन, क्या टाइप्स है टॉपिक्स का. अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, विच एरियाज डू यू नीड टू लुक इनटू, हम ये डिस्कस करेंगे. एग्जैक्ट टॉपिक्स तो प्रिडिक्ट करने हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एरियाज़ आपको बता सकते हैं ताकि आप प्रेपरेशन जो है वो आपका थोड़ा सा चैनलाइज्ड हो जाए, वो थोड़ा सा उसको एक डायरेक्शन मिले, वो हम करेंगे. तो ये है हमारा IBPS PO का सेक्शनल कट ऑफ. अब देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव में देख लीजिए 25 मार्क्स एंड द कट ऑफ वॉज 10, और ECGC में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में द कट ऑफ वॉज अराउंड 21, 20, 20, 20, 21.75 एज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज. ठीक है, अच्छा, अभी आप एक बार ध्यान से प्रीवियस ईयर्स जो टॉपिक्स है वो आप एक बार देख लीजिए. फर्स्ट, तो ये है आपका SBI PO मेंस 2018 एग्ज़ाम, उनका जो टॉपिक्स. उसके बाद देखिए आप IBPS PO मेंस 2017 एग्ज़ाम के टॉपिक्स, और अब देखिए ऐसे टॉपिक्स फॉर ECGC PO 2021. अब ये टॉपिक्स जो है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर, उनसे लिया गया है. अब एक बार टॉपिक्स को ध्यान से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से.
पढ़ने के बाद मैं अगर आपसे पूछूं को आपको क्या लगता है वो कौन सी एरियाज़ है जहाँ से आपको एसे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो व्हाट डू यू फील? व्हाट शुड द डिफरेंट टॉपिक्स बी? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टॉपिक्स पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज दैट यू शुड प्रिपेयर? ब्रॉड, एकदम ब्रॉड आप बताइए, स्पेसिफिक नहीं बताना पड़ेगा, ब्रॉड बेस्ड आप बताइए। तो आप क्या टॉपिक्स, क्या एरियाज मुझे आप बताओगे? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज? Anyone? Yes, Ravi, very good. Environment, excellent. Yaman, general topics. Now your general topics is too general. Specific अगर मैं आपको बोलूँ अगर what do you mean by general topics? What do you mean by general topics? Topics related to? Good morning, Animesh. How are you? Topics related to? Mr. Ravi has given me one answer, environment. Any other topic? Any other areas? Social issues, excellent, very good, very good. So अगर आप देखो पहला वाला, monsoon wreaks havoc in many Indian states. So what are we talking about? We are talking about weather, we are talking about climate, we are talking about environment. अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे, what will you get? You will get topic related to global warming, topics related to renewable resources, non-renewable resources, topics related to pollution, topics related to sustainable energy, topics related to electrical vehicles, everything related to environment. उसमें क्या क्या आएगा? Use of plastics, उसमें आएगा pollution, you will get topics on global warming, you will get topics on climate crisis, you will get topics on renewable and non-renewable sources of energy, right? So environment is a very, very important topic here. You have to prepare on environment. That's one thing. Okay? Next. Yes, very good. Next, Animesh. Excellent. Finance. So when it comes to finance, you should always start with what economy and what is the latest thing happening in the economy, in the country, in especially related to laws, related to legislations, related to strategies implemented. So finance, very, very important. One more thing, always remember something. Now, there are some questions related to the organizations. For example, maybe questions on role of RBI, maybe questions on role of SIDbi. So you have to find out relevant topics related to ECGC, SBI, IBPS. It can just go on Google, type it out, issues, challenges, trends, one or two questions, one or two topics related to the organization that is conducting the exam or the organization that is hiring at that time. Questions related to NPS. So one or two topics related to that, because they expect you to know something about the organization where you will be working. Okay? As a probationary officer. So if you are working as a probationary officer, they expect you to know something about the organization, its mission, its vision, challenges, opportunities, strengths. So don't overlook that aspect. Okay? Next. Ravi, wreaks havoc means destruction, causes destruction, destroys crops. Okay? Next,
Definitely artificial intelligence. If you're talking about artificial intelligence, you will have topics like, for example, gadgets. How is it affecting the young generation? Good things and bad things. So it will be an argumentative topic. They want you to argue. For example, look at this one. Effects of gadgets on intellectual capabilities of human beings. How is gadgets affecting us? There are so many gadgets all around us. Everything from how to make a chapati to cleaning and mopping and aces. So many gadgets and more things are coming up each and every day. Okay, right? So you need to find out topics related to artificial intelligence. It can be a broad view like effects, positive and negatives, or you can talk about things like how is artificial intelligence helping us. For example, during COVID, there were so many hospitals where the robot was used to distribute food so that physical distancing is maintained. So things like that. So it's gonna be, you have to prepare an artificial intelligence, gadgets, cell phones, and positives and negatives. Balanced preparation, positives and negatives. Should not be only positive or only negative, but positives and negatives. So environment, finance and economy. Next, artificial science and let's call it science and artificial intelligence. Okay. Now, what will come under science? Artificial intelligence we just discussed. Under science, you will have healthcare. Was India ready to tackle the crisis caused by COVID pandemic? Healthcare. Vaccination. Latest innovation in healthcare. Use of nuclear power in healthcare. So everything will come under science. Okay. And last, social issues. When you say social issues, it can be from dowry, women empowerment, women in sports. It can be campaigns like vocal for local. It can be campaigns like Atmanirbhar Bharat. It can be anything. It can be things like evils, like prejudice, like caste system, like infanticide, like employment, low employment rate when it comes to women. It can be the economic gap between the rich and the poor, and how is GDP. So two areas can be merged, and you can say how is GDP affecting it, how has GDP aggravated the situation, right? So we are looking at environment, we are looking at socio-political issues. So COVID, definitely what has been caused by COVID, tourism, healthcare, online education, everything. Political, demonetization, GDP, what has the government done about it? Socio-political, environment, finance, economy, science and artificial intelligence, and there are some miscellaneous topics. For example, look at this topic. Schools and colleges, students are given many projects and assignments related to the projects, although there is no research paper. So why is there so few research papers? A lack of R&D, research and development. Why is it missing? So these are miscellaneous topics which it's very difficult to categorize. Oh yes, Animesh, Russia, Ukraine, it's a very, very current topic. So how is it affecting the economy? How is it affecting fuel prices? Everything. How has it affected the aviation sector? If you know, I don't know if you know or not, so many Russian flights, Russian airlines. So you have the entire Aeroflot. They stopped their fleet. Their fleet was grounded. I don't know if you've heard of Aeroflot. Aeroflot is a Russian airline. And they grounded their fleet because Aeroflot was banned by so many countries when the airspace closed down and the war started. So how has it affected economy? How is it affecting global price hikes? Oil prices are going up everywhere, if you know, right? So how has the war affected all these different situations? Right, so we are basically looking at
समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डू इन GA. अब जनरल अवेयरनेस में क्या करते हो, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड करंट अफेयर्स. तो वो जो करंट अफेयर्स का नॉलेज है दैट विल बी वेरी हैंडी, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. ठीक है. अच्छा, तो ये रहा प्रिपेयर क्या करना है. व्हाट विल यू प्रिपेयर, व्हाट हाउ शुड यू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप एसे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रेसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको तो एसे, प्रेसी और लेटर का मेन रिक्वायरमेंट वो तो आपको मालूम होना है ना. क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, व्हाट डू आई नीड टू प्रोड्यूस, व्हाट डू आई नीड टू राइट एंड हाउ डू आई नीड टू राइट. ये तो आपको मालूम होना है पहले. व्हाट तो वी नो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, लेकिन हाउ. तो प्रिपरेशन के पहले, एक्चुअल पढ़ाई के पहले, दिस इज व्हाट वी कॉल होमवर्क और बैकग्राउंड वर्क जो हमें जानना है. तो ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है ये आपको याद रखना है. स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो घर में तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये आपको देना ही है. ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स, जो हम इसको पैरामीटर्स भी बोलते हैं. तो आपका ऐसे जो है इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होनी चाहिए. नेक्स्ट, कंटेंट. कंटेंट क्या है कि जब क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन को आंसर किया और आपके आंसर में बाकी सब कुछ है, लेकिन जो क्वेश्चन है वही आपने आंसर नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आप देखिए. एक क्वेश्चन था, हाउ हैज कोविड अफेक्टेड द एविएशन सेक्टर. ठीक है, तो आपके पास तो 1 घंटा टाइम नहीं है ना, यू वेरी लिमिटेड टाइम एंड ऑल्सो यू नीड टू आंसर अदर क्वेश्चंस इक्वली वेल. तो आपको क्या आंसर करना है, एविएशन सेक्टर बीइंग अफेक्टेड बाय कोविड. लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ी और आपको लगा कि अच्छा मुझे तो सब कुछ मालूम है, हाँ आई नो अबाउट कोविड. सो आपने शुरू कर दिया, कोविड क्या है, कोविड हमें क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी चाहिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द कोविड ब्रोक आउट, व्हेन द पैंडेमिक ब्रोक आउट इन इंडिया, यू रोट एवरीथिंग. और लास्ट पैराग्राफ में आपने सिर्फ 2 सेंटेंस लिए कि हाउ डिड अफेक्ट द एविएशन सेक्टर. तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आपको यू विल लूज मार्क्स इन द कॉन्टेंट. ठीक है. तो स्ट्रक्चर, कॉन्टेंट. नेक्स्ट, फ्लो ऑफ आइडियाज. आप जो लिख रहे हो उसमें एक फ्लो है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड या हैपहैज़र्ड, रैंडम, आपने बुलेट फॉर्म्स में कुछ भी लिख दिए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए. और लास्ट है कि लैंग्वेज. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज टेस्टिंग योर लैंग्वेज. आप हाउ फ्लुएंटली कैन यू राइट. सो सिंपल इंग्लिश बट करेक्ट इंग्लिश, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ठीक है, ये हो गया आपका एसे का रिक्वायरमेंट. ये सब आपको ध्यान रखना है. उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. बट ये जो है ये एकदम बेसिक है, स्टेप वन ये. नेक्स्ट, प्रेसी. रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेम थिंग, एक स्ट्रक्चर होना है प्रेसी. व्हेनेवर यू राइटिंग द प्रेसी, जो आइडियाज है दैट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, एक इंट्रो, एक बॉडी, एक कंक्लूजन. नेक्स्ट, कंटेंट. आपको मेन पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किया या नहीं. Have you included points that are not relevant? Then no, you are losing marks. Have you included points that are extra, that are superfluous? Then you are losing marks. Have you overlooked important points? If yes, again you are losing marks. So how well have you summarized? Main idea जो है वो आपने summarize किया और कितने अच्छे से किया. Next, word count. Very very important in pressy writing. और ऐसे में भी जो वर्ड लिमिट दिया गया है आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते. आपने अगर क्रॉस किया तो 5 वर्ड्स और 10 वर्ड्स विल बी पार्डन्ड. उसके बाद यू विल बी पेनलाइज्ड. ओनली 5 to 10 वर्ड्स विल बी पार्डन्ड. उसके बाद यू विल बी पेनलाइज्ड. सेम इन प्रेसी. वर्ड काउंट 1/3 of the total words. Try not to exceed. If you exceed and if it's more than 5 to 10 words, you will be penalized.
और मैंने जैसे आपको बताया लैंग्वेज, गुड ग्रास्प ओवर द लैंग्वेज. नेक्स्ट, लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट है फॉर्मेट. फॉर्मेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. फॉर्मेट मिस्टर रवि, ये एसे और लेटर का वर्ड जो काउंट है दैट विल बी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. व्हेन यू गेट द क्वेश्चन इट विल बी अराउंड 200 to 250 एंड अराउंड 150 फॉर लेटर. ये आप ऐसे एक रफ एस्टिमेट है. 200 to 250 फॉर एसे, 150 फॉर दिस जस्ट इंडिकेटिव. ओके, ये एकदम एग्जैक्ट काउंट नहीं है. फॉर लेटर फर्स्ट फॉर्मेट, फॉर्मल का फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट. यू कैनॉट मिक्स अप द टू. कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर. अगर फॉर्मेट में कंफ्यूज हो गए तो मानो गया, यू विल लूज मार्क्स, लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स देयर. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर वही मैंने जैसे आपको बताया, बाकी सब मोर और लेस सेम है, कंटेंट और लैंग्वेज. ये है आपका रिक्वायरमेंट. when you are answering the questions and you're taking the exam, जो examiner है that person will look at these parameters and mark you accordingly. Okay, now शुरू कैसे करें? Now you have to start with mock tests. First आपको you have to take the mock test. We have our descriptive English mock tests on ixamBee. You have to take those mock tests. When you take those mock tests, you need to do what we say a SWOT analysis. SWOT analysis क्या है कि आप वो अगर आप mock test आप लोगे तो उसके बाद you will get 1-to-1 feedback from us. Okay? वो हमारा कोर्स का स्पेशलिटी है कि हम 1-to-1 feedback आपको ईमेल में भेजते हैं. तो once you get the feedback, आपको फिर बैठ के ये समझना है कि आपको बैठ के ये आपको समझना है कि स्ट्रेंथ आपका क्या है. आपको एसे में अच्छे मार्क्स मिले या प्रेसी में अच्छे मार्क्स मिले या लेटर में अच्छे मार्क्स मिले. हैव यू बीन एबल टू मैनेज टाइम वेल. आप ऐसे अच्छा लिख लेते हो, सो ऐसे आपका स्ट्रेंथ है. आप लेटर बहुत फ्लुएंटली लिखते हो, लेटर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. यू कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, तो लैंग्वेज वाइज यू आर स्ट्रॉन्ग. आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छे कर लेते हो, सो दैट वे यू आर स्ट्रॉन्ग. आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये आपको बैठ के समझना है कि आप क्या इम्प्रूव आपको करना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है और वो सब एरियाज कौन सा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना है. अगर आपने नहीं किया तो गड़बड़ हो सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश द एसे ऑन टाइम. इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट is a threat. If you don't work on time management, you will lose. You will not be able to finish the paper. Okay? You have not been able to give the title to the Percival. You are not been able. Your title is too long. It is too complicated. It is not reflecting the main content. So you have to work in that area. So you have to sit down and do the personal SWOT analysis. Okay? नेक्स्ट, डेडिकेटेड स्टडी प्लान. वंस यू आर डन कि ये है मेरा स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आपको एक प्लान बनाना है कि मेरे पास वीक में 6 days, आई हैव 6 days. 7th day आई विल कीप फॉर रिविजन और 7th day आई विल डू समथिंग एल्स. मे बी आई विल रीड सम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एसे राइटिंग. सो 7th, एक दिन आप गैप ले लो. 6 days a week. Which day you will write what type of topics, which day you will handle environment related topics, which day you will work on formal letter, which day you will work on business letter, which day you will work on pressy. So you have to create a routine for yourself. But ये जब आप रूटीन बनाओगे ना, इसमें आपको ये समझना है कि आप जब ये ऐसे लिख रहे हो ना, थिंक दैट यू आर रेडी इन द एग्जाम. आप इसको लाइटली नहीं लेना है कि घर में बैठी हो, ठीक है, कैजुअली लिख रही हो, ऐसे नहीं है. एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. एटीट्यूड मेक्स ऑल द डिफरेंस. एटीट्यूड शुड बी कि यू आर टेकिंग अ प्रॉपर एग्जाम एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. फॉलो द टाइम टू अ टी. 15 minutes, jot 15 minutes, close your book, put your pen down and stop writing. You have to be honest to yourself. That honesty you should have. Okay? Next, this is what I said
कि ऐसे topics will come mainly from general affairs. So reading newspapers, reading journals, editorials, this will help you a lot. अगर आप रोज न्यूज़पेपर देखोगे तो यू आर बेसिकली डूइंग आपका डबल काम हो रहा है. यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर GA ऑल्सो एंड यू विल गैदर कॉन्टेंट फॉर essay ऑल्सो. यू विल नो वॉट इज हैपनिंग अराउंड. यू विल नो वॉट इज हैपनिंग. ओके. लास्ट, जब जैसे मैंने बताया, फॉर्मेट और कंटेंट, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. सो स्टार्ट कहाँ से करना है? मॉक टेस्ट से. उसके बाद क्या करना है? स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस. फिर प्लान बनाओ, फिर पढ़ाई चालू करो और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सस्टेन इट. वो जो कंसिस्टेंसी है वो आपको रखना है. ठीक है. अच्छा, तो आई एग्जाम भी आपको कैसे प्रिपेयर करता है? सो वी हैव अ वेरी वेरी वेल डिजाइन्ड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोर्स. So we have mock tests, we have live classes where you can talk to us, you can clear your doubts, and we can give you individualized feedback. We also have descriptive English live classes. So we also give you a study plan from our site. We give you essays, sample essays, essay topics, answers, solved solutions, solved questions, many more. So our descriptive English course is so well designed that it will be, your journey towards cracking the descriptive paper will be so much easier. Don't forget to log in and attend the sessions, क्योंकि as you know ये series on है and we are having daily live sessions from 4th April 11 AM every day. And this will go on for a long time. We are going to look at so many different videos, so many different topics. We're going to talk, we will be brainstorming, we will discuss previous year's papers, and I hope you enjoy the series and you find it useful. Do let us know in the chat box what help you need and what guidance you need from us. Also, don't forget to fill in the Google form and watch out for the BeeBanker online course. It's here, it's real, and it's so exciting. It's so well designed. I'm sure you will like it. You will love it. You find it very very useful. Thank you so much. I hope the session was useful to you and you got some information about how to prepare for descriptive English. Yes? And I'll be back again very soon with another session. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for watching.